for much more analysis on the match today. But who is going to be hero of the 2020? I don't know whether it's too difficult to guess. We have our expert in the studio. So first of all, I would like to welcome everyone saying that, well, this was quite a good cricket. I'm Gitanjali Soni. और मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे दो शानदार एक्सपर्ट सीनियर क्रिकेटर और बहुत ही तजुर्बेकार। जिस तरह से पिछले प्रोग्रामों में मज़ा आया डिस्कस करने में, वेंकट सुंदरम और वरिष्ठ खेल पत्रकार एस कनन, स्वागत है आपका। थैंक यू। और क्या लाजवाब मैच रहा। 101 रन से भारत जीता, शगुन भरी जीत। और जिस तरह से शतक बनाया विराट कोहली ने, अब शकुन दूर किया 96 मैचों के बाद। क्या कहेंगे कनन? आई थिंक बहुत लंबा वेट लगा, 3 साल का वेट, बट जो आज उन्होंने दिखाया कि ओपनर के रूप में T20 में उन्होंने पहले IPL में शतक मारा है, बट T20 इंटरनेशनल में मारना दिखाता है कि अभी भी दम है उनमें, जान है उनमें। जी, जान तो बिल्कुल है, और जान हमारे कॉलेज में भी है, क्योंकि उनके बिना हमारा शो अधूरा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1084, 2342-1085, 011 हमारा कोड, और सेम रूल है। अगर आप मोबाइल से करते हैं 011 लगाएंगे, अगर दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तब भी 011 लगाएंगे। और क्या कहेंगे वेंकट, जिस तरह से आज भुवनेश्वर कुमार ने भी काफ़ी दमखम दिखाया और 111 रन ही बना पाई अफगानिस्तान की टीम 8 विकेट के नुकसान पर। जी, आई थिंक भुवनेश्वर जो है, जहाँ आज उनको स्विंग मिल रहा था और उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, बॉल आगे डाला उन्होंने और दोनों तरफ मूव किया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ थोड़ा मूवमेंट हो वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन आज देखा, और पहला मैच जो था, इंडिया जब पहला मैच खेला, 4 विकेट दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, तब उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया था। तो जहाँ विकेट में कुछ है, तो आज थोड़ा घास था, थोड़ा हार्ड था, तो लग रहा था कि ही इज़ क्वाइट इफेक्टिव। और कनन, ये देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था आज के वाकई वही टीम है जिसके बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में सारे लोग इतने टेंस हैं कि क्या यही टीम, यही खिलाड़ी हम लेके वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हैं। आज चाहे आप विराट की बात करें, चाहे वो भुवनेश्वर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट KL राहुल, सो इट डिड नॉट लुक एनीथिंग ऑर्डिनरी इवन। सो व्हाई सच अ huge difference? No, I think you cannot get carried away by one win. एक जीत से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आपके सारे पुराने पाप माफ हो जाएंगे। विराट कोहली coming to form, yes, that has been the brightest spot. But again, I still will disagree with Venkat, as I said before, that he should be opener. No, I don't think you should do that. Against Afghanistan, yes, but you're going to play in the ICC World T20. The standards are going to be different. Fact is, you have struggled here. You struggled in this tournament. You know, the whole hype was India versus Pakistan final. Fizzle out हो गया. As regards Bhuvneshwar Kumar, when he pitches the ball up, he definitely gets a ball to move. ऑस्ट्रेलिया में भी कंडीशंस बहुत अलग होगा, दुबई और अबू धाबी, शारजा की तरह नहीं होगा। बट ये सोचना कि अफगानिस्तान को हमने हरा के we have achieved everything, no. There is still a very challenging moments ahead. The selections have to be made right. And only one man looks the most fit. That is Virat Kohli. मैं ये कहना चाह रही थी, whether आप अग्री करते हैं वेंकट सुंदरम जी से या नहीं, लेकिन हमारे कॉलर्स कितना अग्री करते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आदेश जी, जुड़ते हैं उनसे। हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं बांदा उत्तर प्रदेश से शिवपाल सिंह यादव बोल रहा हूँ। जी सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है। पूछिए अपना सवाल पूछिए। ये चौके और छक्के लगने पर ये कोई BSNL वाला सिस्टम खत्म हो गया है क्या? हमारे स्पॉन्सर्स को लेके टेंशन है इनको। जी कोई बात नहीं, चौके छक्के आप सुनते रहिए। और एक और लिसनर से जुड़ते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार जी, नाम बताएं। जी, पाली जिला से राजस्थान, सिकंदर मोहम्मद बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी सिकंदर, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, पहले कोहली पाकिस्तान के खिलाफ और भारतीय श्रीलंका के खिलाफ क्यों नहीं चला था सर? आज इतने कैसे चला? जी देखिए, खेले तो थे लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और शतक बनाया था। तो कन्नन, यहाँ पर ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले शायद एक कॉलर और हैं। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? जी देखिए, आपका रेडियो सेट चला हुआ है, हम आपकी आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्षमा कीजिए। जब आप हमसे जुड़ें तो
कृपया अपने रेडियो सेट को बंद रखें। और आदेश, ये बात हम बार बार अपने श्रोताओं को कहते हैं कि जब भी आप हमसे बात करें अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, अन्यथा आपका भी एफर्ट बेकार जाएगा और हमारी भी बात आपसे हो नहीं और पाएगी। कन्नन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गेंदबाजों ने तो दम लगाया, लेकिन फिर भी ज़ादरान ने जिस तरह से 64 रन बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि बॉलिंग में थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही मैंने कहा जब गीतांजलि ने पहले सवाल उठाया क्या सब कुछ ठीक हो गया, एक मैच से ठीक नहीं हुआ है। फैक्ट रिमेन्स दैट अभी भी बॉलिंग में आपका कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो रहा है। एक मैच में अजीब और गरीब है, एक मैच में ऐसे लग रहा था कि आप छठा बॉलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कभी आप अश्विन को खिला रहे हैं। तो आई थिंक वंस बुमराह कम्स बैक लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट सेटल्ड। बट क्या कॉम्बिनेशन पिक करने वाले हैं आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्नन, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। क्या मोहम्मद शमी लौटेंगे, हार्दिक पांड्या एक 5वें बॉलर के रूप में रहेंगे, क्या आवेश खान होंगे, या हर्षल पटेल होंगे, या अर्शदीप सिंह होंगे? काफ़ी ऑप्शन हैं। और स्पिन में क्या फिर युजवेंद्र चहली लास्ट चॉइस है? आई थिंक यू शुड टेक अश्विन फॉर द एक्सपीरियंस ही हैज़ एंड द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड। इस बार हमने देखा कि आईपीएल में भी उन्होंने जान लगाया, तो वो ज़ाती नहीं होनी चाहिए उनके साथ। दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। यू नीड एक्सपीरियंस बॉलर्स ऑल्सो। आप अर्शदीप से डेथ ओवर बॉल करा रहे हैं, मतलब लास्ट ओवर बॉल करा रहे हैं, यॉर्कर भी डाल रहे हैं, ज़्यादा रन कंसीड नहीं कर रहे हैं। बट ये भी हो सकता है कि वो नए हैं, जो बाहर का प्रेशर है वो अलग है। दुबई के मैदान और ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में बहुत फ़र्क है। बाउंड्री साइज भी वहाँ पे बड़ा है, वहाँ का कंपटीशन का स्तर बिल्कुल ही ऊंचा होने वाला है। ऑल्सो वेंकट, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम दीपक हुडा के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे थे। आज फाइनली उनको मौका दिया गया और उस मौके का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया एक विकेट लेके। लेकिन जैसा अभी आदेश भी कह रहे थे कि जो कॉम्बिनेशन बॉलर्स की बात कर रहे हैं उसमें दीपक हुडा कहाँ फिट बैठते हैं फिर? I don't think he's that quality, to be honest with you. So, coming back to my point, today Kohli getting 100 as an opener gives an Indian team an option. Even if Rahul and Rohit open, and suppose they don't strike form or they fail, Kohli can open. He has proved it today. And Yeah. the second thing is that gives you an option of playing 5 batters. Say Surya Kant Yadav can be added to that. Rishabh Pant could be added. Rishabh Pant can also open. So you got a good combination of batsman specialists who can open. But he's steady. What? Please Okay. let me Ji, finish. ji. The other thing I'm saying is that you can have 5 bowlers and you can have an all-rounder. And Rishabh can keep the wickets as well. So that will be your combination. 5 bowlers with say Hardik as the 6th option and 5 batters. And Hardik also coming in as an extra batsman if required down the order. Right. So this would be an ideal combination. Okay. And that is what I think you will see in the World Cup. So this is about the combination. What I was trying to ask is, can one-time performance can be taken as, the form is back, or maybe this probably could be the right combination? Well, that remains to be seen because there's a lot of cricket between now and the World Cup. There are 2 series coming up against Australia and South Africa, and as you see that injury is part and parcel of the game, and players do buckle down under pressure and in different conditions. So Right. that remains to be seen who's fit and who's capable. So there are 2 things to be seen there, but by and large the combination is evolving gradually, and what we need to see is to add the specialists who are the people in form. You should go for the man in form, because that is what we have seen even in this 4 or 5 matches that India has played in. The person in form has clicked, whether it is Surya in one innings or it is Hardik Pandya or even Kohli. Kohli has had a good series throughout, if you look, barring the last innings where he failed. But otherwise, he has been consistently scoring runs. And Rahul has played well today. Also, Rohit got a 70 in the last match. We shouldn't forget that. So, these people have experience. They've played enough cricket. And that they will form the core of the batting. Now, bowling, you can always have, you need pace. That is what is missing. All these players, Arshdeep and Bhuvaneshwar, 130, 134, 135. You need 140 to 145. Yes. तो उसके लिए तो So that I think Shami and Bumrah, when they come back, they give you that option. And maybe you have to see whether there is a Avesh Khan or somebody Harshal else, Patel. Harshal Patel, if he's capable of getting 140 plus, because in Australia this 138, 140 you need.
And if you can get that third bowler of that pace, that will add a lot of things. आज 101 रन से जीते हैं, लेकिन 2022 कमाल का साल रहा है और 3 भारतीय खिलाड़ियों ने 2020 क्रिकेट में शतक जमाया। दीपक हुडा ने 104 रन बनाया, सूर्य कुमार यादव ने 117 और विराट कोहली ने 122। और कमाल की बात है, तीनों ही खिलाड़ी इस समय टीम की स्क्वाड में हैं। तो यहाँ आपको लग रहा है कि क्या दीपक हुडा के लिए अभी आने वाले मैचों में टीम में जगह बनाना आसान होगा, या फिर 2020 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए मद्देनज़र रखते हुए उन्हें दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें मौके दिए जाएंगे? मौका तो दिया जाएगा, ज़रूर दिया जाएगा, बट आई एम नॉट हैप्पी विद सूर्य कुमार यादव। बड़ा अच्छा रहा है उनका IPL सीज़न, और शुरुआत जो उन्होंने किया ऐसे लग रहा था कि ये एक डिपेंडेबल बैट्समैन होंगे, पर डिपेंडेबल नहीं लग रहे। आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे ना ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस को भी, एज अ विकेट कीपर, एज अ बैट्समैन, मेरे को आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी एक्चुअली। क्या 2 विकेट कीपर ले जाएंगे? क्या दूसरे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक होंगे? क्योंकि उनका बैटिंग भी काम आ तो सकता है। कन्नन, मैं आपको से सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या सेलेक्टर्स भारतीय कप्तान, मैनेजर और टीम के खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे कि 2020 वर्ल्ड कप से पहले हम जो कॉम्बिनेशन चाहते हैं उसी कॉम्बिनेशन के साथ हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे? कन्नन, इसका टीम जवाब सिलेक्शन आपसे विल बी बेस्ड ऑन दीज 2 tours एंड आल्सो व्हाट द कोच द्रविड वांट्स। अभी क्या है ना, हमको पता है कि बहुत सारे कलेक्टिव कॉल्स हमारे साथ आएंगे, तो इसीलिए हम इकट्ठे आपसे जवाब लेंगे। अभी काफ़ी सारी कॉल्स होल्ड कर रही हैं, तो पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते बड़ी जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ भैया, हम बहुत अच्छे हैं जी। बड़ी जी अच्छा है। आप स्टूडियो में सभी विराजमान महानुभावों को नमस्कार। सबकी तरफ से आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मैं करण सिंह मेहरा, ग्राम उमरझेर, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से अमूल सिंह मेहरा, शिक्षक बूढ़ा पाला वाली एवं कल। जी, बहुत बड़ा आपका हो गया, अब आप सीधे सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारा सवाल ये है सर जी, भारत फाइनल खेलेगा न खेल पाएगा? जी। वैसे तो अब खैर कोई बात नहीं, हम आपको बता दें कि रविवार को फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होगा। यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे वेंकट जी, एक और कॉल है हमारे साथ जी, जुड़ते हैं उनसे। हेलो। आपके शो में दूसरा वेंकट आ गया जी, वेंकट रेड्डी जी, बस सीधे सवाल पूछिए, मैच की एनालिसिस मत करना। विराट कोहली फॉर्म में है, वो जी। शुभदायक है जी। मेरे हिसाब से। दीपक हुडा को खिलाना है, इनको टॉप ऑर्डर में ही खिलाना है जी। सर सवाल। दूसरी बात ये है, शुभमन गिल को चांस देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। उसके बारे में वेंकट सुंदरम जी क्या कहते हैं? ऑल राइट, सो थैंकफुली लिटिल लेस एनालिसिस, बट आपसे सवाल पूछे, शुभमन गिल को थैंक्स कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि he is a very talented cricketer. He has done well in Australia also, we should not forget. He had a good series in the test matches that were played there. He got a brilliant knock of 90 plus at in the last test at the Gabba, which we won. So we should not forget his capabilities of handling Australian pace in Australia. And that's a great plus point in his favor. Now coming to T20 cricket and how he plays in T20, that remains to be seen. And whether there is a space for him, because the opening slot seems to be, as far as the Asia Cup is concerned, between Rohit and Rahul. And now options are coming around. Right. So whether he fits into those options, that remains to be seen, and maybe he should be given a chance against either South Africa or Australia in India to see how his form is in T20. Kannan, what's your take on it? I think you basically will need to take 3 specialist openers to Australia. I will not put Virat Kohli as you're going to disturb the whole balance in the batting. So who's going to be the third one needs to be probed. But I still feel, as I said before, that let's wait for the 2 series at home. There is, if Asia Cup was an experiment with truth, more truths will come out in these 2 series, and then you can decide on what is the best available option. Do not forget, it is not just about picking names. It is not about one Huda or Gill, I mean, we've forgotten someone. And India has been one country where we have still not decided what is our test best, what is our ODI best, what is our T20 best. For example, we are still using Shikhar Dhawan, making him captain, sending him out. So you still got him in the idea for the ODI.
but he's obviously not there for T20. We are forgetting a name of Shardul Thakur. He's also been a very valuable cricketer. There's so many names which come up, and we've also got the Duleep Trophy matches going on. So first, let's look at who are going to be picked for these two series at home, and you get. I think 6 to 7 names are clear from there. There are about 4-5 spots open. आज का मुकाबला तो खैर भारत ने जीत लिया है और ये ज़रूर बात थी कि आज के मुकाबले में सबकी दिलचस्पी केवल आंकड़ों में थी। तो सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ये केवल भारत के 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाया। और थोड़ी देर में हम चलेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, जहां भारत के खिलाड़ी और अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी तैयार हैं ये बताने के लिए कि कैसा रहा उनका अनुभव। Couple of tough nights in a row, Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, it's really tough to play against Pakistan that night. Tight game, and also straight away next game against India. Totally tough. Dehydration in this kind of condition we played, and mentally wasn't prepared for that game. We tried our best to prepare for that game, but mentally the boys we wasn't prepared. It was one of the best T20 games that we witnessed. You were winners when the 19th or the 20th over began. You were the clear winners. Now the general impression was that today you guys looked also maybe emotionally jaded. Would that be a fair observation, considering the emotions were running so high in that game? Yeah, today we also tried our best, but the way KL Rahul and Virat started, and also in the middle we dropped some catches as well. That's why the momentum goes through India. And also in the batting, we didn't expect that much swing. Early wickets throw down in the power plays. It's all happening in the cricket. But everyone really impressed with your performance as a team, the rise that we've seen with Afghanistan. Your review of the whole tournament, how has it been as a captain? Are you happy with what your team has done here? Yeah, as a captain, the way we started the tournament was in a high morale, and also we played last 2 games also in a good. We didn't finish well, but the way we played really well. But we didn't finish really well. Yeah, that's why we are a little bit disappointed as a team. We didn't finish very well. Well, the graph is going only up for everyone to see. So well done. And hard luck tonight, and all the best for the future. Thank you. Thank you. Right, that was Mohammad Nabi, the captain of Afghanistan. Let me now invite Mr. Rikant Pitti to present the catch of the match winner, a check of USD 3,000, and this goes to Virat Kohli. That catch in the slips to dismiss Karim Jannat. We're seeing the ball well tonight, that's for sure. So the catch of the match winner is Virat Kohli. And this was the catch for which he wins the award. Yeah, it was like a test match field for Bhuvaneshwar Kumar, who was swinging the ball big time. Right, next up, if I can ask the Indian captain, who is KL Rahul, to sign the match ball for Yahia Kalshekar on behalf of Rasasi Perfume. So KL Rahul will sign the match ball, and there you go. There's Yahia. We'll be delighted with that, and I'll invite KL to come and have a chat. Personal form first. I thought you batted superbly, so 2 terrific innings for you in this tournament. Yeah, I mean, coming back after a big injury and surgery and everything, I realized playing the last few games that it's not as easy as you think. Back home, you obviously have trained really hard and was really eager to come and play cricket for my country again. But obviously finding the same touch or the same rhythm wasn't coming as easily as I thought it would. So obviously it's a learning for me again as a player that once you go out of the game for a few months, it does take time to come back and find that rhythm. So I'm happy that I could find some time in the middle. And once I hit a few balls in the middle of the bat, once I got a little bit of rhythm and time in the middle, I started feeling good. Are there certain shots, because most batters, they feel, I'm getting back to my best if I hit maybe this shot? Are there any shots that you feel, wow, okay, now I'm feeling good, I'm back to my best? Not really. I mean,
I think in this format, especially when you hit that first six out of the middle of the bat, that gives you confidence. Naseem Shah's slow delivery, did that? No, I think the Hong Kong game, I got a free hit. I was lucky. I obviously didn't time it as well as I would, but I still hit the ball out of the ground, so it felt good. And then I hit one more six in the same inning, so it just felt good. And then obviously coming into the Pakistan game, I felt a little better after the Hong Kong innings, and then getting away with a few shots in the Pakistan game gave that confidence. And yeah, slowly I'm getting into that rhythm, and hopefully I can get better and grow as a batsman, and that's what my team expects of me. A review of India's performance in the Asia Cup. It was Rohit Sharma's job, but you're captaining today. So quick review of how the tournament has been from Indian cricket's point of view, with the World Cup, of course, on the horizon. Yeah, obviously the result has been disappointing. We would have ideally wanted to play the finals and challenge ourselves. We came into this tournament wanting to play that finals, wanting to get into the groove of winning big tournaments. That was a talk, and unfortunately the results didn't go our way in the first two games. But yeah, like every other tournament, there are positives, there are things that we take out of the tournament, and this has been one more tournament like that where we've really been challenged, and like I said, results haven't gone our way, but obviously it gives us time to sit back and reflect and see where we need to get better as individuals and also as a team. And I think it's happened at a really good time. Obviously losing is not great. Nobody wants that. All of us work really hard and we want to win every game for our country, but sometimes you got to take it as part of the journey and part of learning as a group. And obviously our vision's always been World Cup, and hopefully the things that we learn here will help us in the World Cup. Well played tonight, and all the best for the future. Thank you. Thanks. So that was KL Rahul, the India captain. Our final presentation is the player of the match, and there can be only one tonight. Virat Kohli is our player of the match. 122 not out, and he'll accept a check of USD 5,000 and a trophy from Mr. Abdullah bin Damitan, CEO and Managing Director, DP World UAE and Javza. 12 fours and 6 sixes. It's a bit tough for me because we had an extensive chat in the mid-innings and I tried to get inside your head and talked about celebration. Let's assume new viewers watching this post-match, just again, the emotions, achieving that, now hundreds in all three formats, Virat. Yeah, well, I mean, it's firstly, I'm very grateful for how the day went today. As I said, time away from the game really gave me a good chance to sit back and observe a lot of things about me. I mentioned one special person who stood by me, Anushka, through these tough times. And I mentioned her because she's seen the absolute raw side of me throughout all these months that have gone by, which have been very tough, to be honest. So she's the one who kept putting things in perspective for me, kept giving me the right kind of guidance, right kind of vision moving forward. And I came back into the system a very relaxed person. I wasn't desperate to prove anything to anyone in the real sense. I mean, not in a way that, I've done everything, but it was just about enjoying the game, understanding what God has blessed you with already over so many years, and then just being humble in the hard work and going out there and doing the grind all over again. That was basically what zone I came back in. And today, I think, was a build-up from the last few games, and today I actually batted out of my skin, to be honest. I surprised myself out there. Yes, we've seen the progression right from the first 50 that you got. Every inning, the graph was going up. Just another aspect, being Virat Kohli, the 70-odd hundreds that you've got at the international level, they seem to come every second day. And suddenly, you're looking at 1,020 days when it doesn't come. So put that into perspective for maybe normal batters at the international level. Well, what actually surprised me was my 60s became failures, which was quite shocking for me. I was like batting pretty well and contributing, but doesn't seem to be good enough. So look, I mean, I can't really pinpoint anything to anyone. Yeah. As I said, God has blessed me with a lot of good times in the past, and that's why I'm in this position where these things can be spoken about. I'm not saying that I feel an inflated sense of ego standing here saying I have created this. It just happened to me. Yep. And I have absolute no shame in admitting that God is blessing us all with everything that's in our destiny. And
We just have to work hard. So I went back to the drawing board, as I mentioned, came back fresh, came back excited. I kind of left all that behind me, and also the team environment. I had mentioned the management as well. True. They've had great communication with me through these times. They've kept me very relaxed, kept my perspective very right. And when I came back as well, there was not much, information coming my way. They just said, you just bat and enjoy yourself. And I out of experience, I know when I'm playing well, I've done it in the past already. I can play like that for the team. So it was just a matter of getting back into the space of enjoyment. It was always going to be a very important Asia Cup for me personally as well. From your point of view, Virat Kohli's performance. As of today, you're the highest scorer. Well. Today was Virat's day, completely player of the match, catch of the match, and indeed, I'm pretty happy to see him happy because it was long overdue. And right now, coming ahead, all the matches which he's going to play, we just wish him all the best. 276 रन बनाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में। कमाल कर दिया, मतलब मैंने बोला ना, आज तो खैर विराट का दिन था ही। कनन, जिस तरह से विराट ने काफ़ी चीज़ों को एलिब्रेट किया और अपनी पत्नी अनुष्का को भी काफ़ी श्रेय दिया, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में उनका साथ दिया, क्योंकि ये उनके लिए एक तरह से बहुत लंबा पीरियड हो गया था। जैसे कि संजय मांजरेकर ने उनसे पूछा भी कि 1020 दिन तो कैसे बीते। देखिए, लंबा पीरियड ज़रूर था, बट ये ज़रूर जो फैमिली का रोल था बड़ा इम्पोर्टेंट था अनुष्का शर्मा का। ऑल्सो ही थैंक्ड हिज थर्ड मेंबर इन द फैमिली, डॉटर। ये भी ना भूलें कि ऐसे नहीं कि सारे फैंस छुरी लेके खड़े हुए थे विराट को मारने के लिए। He has a huge fan base in India, in overseas countries also, and everyone wants to see Virat Kohli do well. Nobody wants to see any Indian cricketer do badly, and Virat Kohli has set such high standards for himself that you expect centuries. And the main thing is the timing of his return. It is not just about the century. He has been showing enormous application in every match, and I think if it was against Afghanistan, you should not forget what he did against Hong Kong also. ऐसे नहीं है कि वो लास्ट मैच में, yes, he got out, played across the line, but he's realized that he puts a premium on his wicket, and he knows India is still banking on him, whatever be the undercurrents. और अब वेंकट आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे कि कल क्या रिहर्सल होगी पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले की, क्योंकि रविवार को तो उन्हें फाइनल में भिड़ना है, तो क्या पूरा दम लगाकर खेलेंगे या पूरा दम कुछ बचा कर रखेंगे फाइनल के लिए? देखिए कि जो एक विनिंग है ना, ये एक हैबिट है। अगर आज हम कोहली के बारे में बात करें, बिकॉज 70-100 करना इंटरनेशनल में इजी नहीं है। 70-100 अब तो 71 हो गया आज। तो वो 70 जो था ना, वो मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो था, एवरी सेकेंड इनिंग्स वाज 100। अब वो गैप हो गया एंड ही गॉट 100 टुडे। सो मैं कह रहा हूँ कि विनिंग सिमिलरली हैबिट। अगर आप कल जीतोगे तो फिर नहीं, कुछ छुपे रुस्तम तो बचा के रखने होंगे ना। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो हैबिट है हमारी टीम को बनी रहे, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स हैं उसमें भारतीय टीम बहुत ही अच्छे सशक्त तरीके से, एक बहुत ही हेल्दी माइंड और हेल्दी एनर्जी के साथ खेले। फ़िलहाल आई थिंक दिस वाज अ ब्यूटीफुल मैच टुडे। जो कल अभी बैक टू बैक जो भी हमने घाटा, जिसे मैं कहती हूँ ना, फील किया है, वो काफ़ी हद तक उसकी क्षति पूर्ति हुई है। बट उम्मीद अभी भी ये करते हैं कि आने वाले टाइम में वी विल सी अ ब्यूटीफुल क्रिकेट फ्रॉम टीम इंडिया, एंड आई थिंक ऑल द क्रिकेट लवर्स विल लव इट। But for now, I think we have to thank our experts. They are always, I think they are brilliant, and जितने भी हमारे कॉलर्स हैं वो उनके सुझावों का, उनके एनालिसिस का वेट करते हैं। तो सबसे पहले वेंकट सुंदरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कनन। इट्स सच अ प्लेजर ऑलवेज हैविंग यू एंड योर द quirky answers and of course the insights, and there's a nice leg pulling in the studio, so thanks for that energy. I think I would like to thank Virat Kohli for making us talk all this, because otherwise, even in a dead match, he's infused so much life. It looked like team was on the ventilator. This type of opportunity. But all of us have, found that bubble all over again. The spark is back, and I think we'll find our champagne moments in Australia. Absolutely. और आपको भी आज काफ़ी दिनों बाद इतना जोश में देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम सब ऐसी जोशी ले रहे हैं। कर्तव्य है। और हम अपनी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हु हैव डन सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन, एंड थैंक यू जितने भी हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्रिकेट को सराहते रहिए, हमें सुनते रहिए। गीतांजलि की तरफ से, आदेश की तरफ से और हमारी समस्त टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
हीरो ऑफ द 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।